Now other young people are not doing it. They are like doing hookups. लड़का बैठ के लड़कियां टला रहा है या लड़कियां बैठ के लड़के टला रही हैं. कोई किसी के पीछे नसें काट रहा है, कोई कहीं रो रहा है, राइट? उनको ये सब क्रेजी लगता है बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग एंड लाइक दीज पीपल आस्क योरसेल्फ, आप लोग ठीक हैं क्या? आप ये चीज ठीक कर रहे हैं? यो गाइस, नमस्कारम. So, Debu ki Dastak is a platform where we talk on mental health and a lot of other sensitive issues, right? So basically, the entire aim of this channel is to build a community around sensitive issues and make people feel comfortable about themselves. So basically, if you're new here, consider subscribing. Our mission is to empower you with ideas to live smartly and joyfully. The world is full of suffering, but let us increase our competence to deal with things joyfully. And just a tip, so all these are basically conversations, so I might suggest that you should watch these conversations at 1.5x. You can increase the playback speed through the button in the settings. Cheers and enjoy watching. Yo guys, part 2 इस बुक सीरीज का. आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने नाम गलत बोल दिया बेचारे का. इट्स राज शमानी. माय बैड राज if you're seeing this. Anyhow, let's continue. So yeah, I think these are like just some more fundamental lessons from the book which I think are very important per se. So I think the number one lesson is that we should stop seeking external validation. What this basically means is हमें हमारे खुद के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मेरे को अपनी नज़र में वैल्यूबल बनाती हैं. It's not that we are doing certain things just to please others या उनसे acceptance पाले. None of that shit. Just do things for your own internal validation and validate your own self. Don't look for a father figure or anything of that sort because वो आपके लगाएगी ही लगाएगी जिंदगी में. There's no question about it. आज नहीं तो कल. Because you lose your entire sense of personality by pursuing something that you're not just to please that bloody person. The second thing is you don't get a certificate of participation in real life. What I understood from it that हमें स्कूल में बचपन से ट्रेन किया जाता है, ओह आप ये परफॉर्म करोगे, यहाँ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने पार्टिसिपेट किया. इन लाइफ इज़ प्रिटी ब्रूटल. फिर किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. वेदर यू आर अलाइव, यू आर डेड, नथिंग मैटर्स. इवन योर फैमिली मेम्बर्स, आई थिंक लेट्स से किसी की डेथ होती है, ठीक है 2-3 दिन शोक बनाएंगे, 5-6 दिन बाद बोलेंगे ओ यार हो गया अब क्या कर सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है, राइट? दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू काइंड ऑफ हियर. So I think just stop expecting a lot from the outside world. Expect a lot from your own self, but बाहर वाले से कुछ नहीं expect करो. The freer you are from the expectations of बाहर वालों के लोग, उतना ही आसान है इस लाइफ में navigate करना. Okay, another lesson in tandem to that is sometimes जब आप कुछ करते हैं आपको लगता होगा यार मैं क्या crazy चीज़ कर रहा हूँ, because people from your age others बाहर या दूसरे वाले नहीं कर रहे. don't stop yourself from doing something which you're genuinely interested in and क्योंकि दूसरे लोग नहीं कर रहे. Just to give some example, let's say कहीं लोगों को ऐसे योगा वगैरह की आदत होती है और let's say very much people are into spirituality. Young people are also kind of going into that direction these days. Now other young people are not doing it. They are doing hookups. लड़का बैठ के लड़कियां टला रहा है या लड़कियां बैठ के लड़के टला रही हैं, कोई किसी के पीछे नसें काट रहा है, कोई कहीं रो रहा है, राइट? उनको ये सब क्रेजी लगता है बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग एंड दीज पीपल आस्क योरसेल्फ, आप लोग ठीक हैं क्या? आप ये चीज़ ठीक कर रहे हैं? इंस्टेड no one asks them ever अगर बंदा let's say a person who is taking drugs or let's say who is abusing alcohol like crazy, oh yaar aap theek cheez kar rahe hain, it's considered normal. You see the hypocrisy of different standards which we, or let's say the value which we assign to different standards in life. So I think the point here is that just don't restrict yourself if you're genuinely interested at that specific thing just because others of your age think that it is crazy. Don't restrict yourself, just keep on exploring and exploring and exploring. Okay, cool. So the next lessons are kind of I think inspired more from Gary Vee because Raj himself talks in his book that wo thoda Gary Vee inspired him. So he says that you should do what suits you, be it a business or a job. It's not necessarily अगर job कर रहे हैं तो आपको business ही करना है क्योंकि सब कर रहे हैं. Let's say अगर आप business कर रहे हैं
एंड आपको कई बार अजीब सा लगता है, वो यार मैं जॉब में घुस जाता हूँ, लाइक नन ऑफ दैट शिट. वट एवर सूट्स योर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, या वट एवर यू थिंक यू हैव अ स्पार्क फॉर और अ नैक फॉर, जस्ट गो इनटू दैट स्पेसिफिक थिंग. एंड जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नंबर वन, नंबर टॉप के लिए अचीव कर रहे हैं. यू कैन बी अ वेरी गुड नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स. मतलब जरूरी नहीं है हर चीज में टॉप पे जाना है. कई बार बस डिप्लोमेसी से जस्ट हैव टू पेव योर वे थ्रू लाइफ. इट्स नॉट नेसेसरी. कई बार लाइक जो हम सोचते हैं हमारी गेम्स हैं जहाँ पे हमें नंबर वन बनना है, लाइक दोज आर नॉट इवन आवर गेम्स. लाइक सम थिंग्स आर जस्ट नीडेड टू pass by situations and just like live a calm and stable life. So don't kind of hurt yourself in that process. Oh yeah, मेरे को नंबर वन बनना है, वहां जाना है, वहां जाना है. Because what would happen in the end is you'll just waste your life chasing arbitrary numbers which keep on changing. नंबर वन हर साल बदलता है. लाइक कितनों को अवार्ड मिलता है, अगले साल लाइक कोई और ले रहा होता है वो अवार्ड, और उसके अगले साल कोई और ले रहा होता है. 5 साल बाद पता भी नहीं होता, अच्छा तूने भी अवार्ड लिया था. लाइक those kind of things people ask, right? So like don't just fall into this trap. Like always go and cater to that specific things which cater to your own individual self, specifically speaking. Okay. And I think a very good lesson which Raj gives us here is like, this is I think relevant for business people per se, but he says that you don't need millions in investments to back you in order to start something. Start with whatever you have and grow it. क्योंकि हम कई बार ना रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि कोई चीज स्टार्ट करने से पहले मेरे को 10,000 का कोर्स करना है, 20,000 का इक्विपमेंट लेना है, 40-50 हजार का वो स्पेसिफिक चीज लेनी, तभी मैं वो चीज स्टार्ट कर पाऊंगा. आई थिंक अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट कि जो भी आपके पास है अभी अभी अवेलेबल, लाइक लेट्स से इफ इट्स 1%, लाइक जस्ट वन स्पेसिफिक पर्सन, लाइक उस 1% से पहले आप पूरा 100% सीखें, एंड फिर उससे चाह पता लगती है कि आप पागल हैं उस चीज के लिए सीखने के लिए, एंड देन just kind of expand more on that specific thing. And I think this is where the role of creative thinking comes in. Like you just don't have to follow a conventional path, एक set in stone वाला path. ओ उसने ऐसे सीखा है तो मैं भी सीख पाऊंगा. No, like none of that shit. You are a different person. You can have a different way of reaching the same goal. What matters is the destination, not how you reach there, specifically speaking. So yeah, I think these are two fundamental lessons, and like it's okay to fail. अगर आप फेल भी हो रहे हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है. लाइक लाइफ इज़ लॉन्ग. अगर आप जवान लौंडे हैं या लौंडियाँ हैं, 25-30 साल के भी हैं, लाइक तभी भी आगे की ज़िंदगी पड़ी है अभी. It's fine if you're failing. So yeah, I think those are like certain specific lessons. Let me know what you feel about it. Just a couple of updates. So my website is live now. So you can go to www.debukidastak.com. There you'll find a lot of resources. I have my blog running there. I have my reading list for the years. If you have any suggestions, comments, I'll be happy to take that feedback in and improve, because I just want to build a community which is hell smart and just always living in the world of ideas and making things happen. Okay, so this is part 2. I think the more I read, I'll maybe find something good, but more or less I had kind of covered this book because मेरे को इतनी ही irrelevant चीज़ें मिली इससे. But ठीक है, let me know what you feel about it. And this is Debashish Pindra from Debukidastak signing off. Cheers.